Good morning, students. All are fine. I also. Okay, yesterday we have discussed in Zoom class animal tissue. There are four types of tissue: animal tissue, epithelial, connective, muscular, and nervous. Okay, then we have discussed epithelial tissue. Okay, now today we revise connective tissue. What are connective tissue? Connective tissue means the tissue those are connects, supports, binds and separate the organs, various organs. इज इट क्लियर? जो बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपके सेपरेट भी करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, दीज आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है आपका? मैट्रिक्स. देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट इज सॉलिड मैट्रिक्स, सेकेंड इज फ्लूइड मैट्रिक्स, थर्ड इज जेली मैट्रिक्स. In solid matrix, there are two tissues, bones and cartilage. In fluid matrix, blood and lymph. And in jelly matrix, it is loose connective tissue and dense connective tissue. In loose connective tissue, it is areolar. In dense connective tissue, it is adipose. Adipose divided into two parts, tendon and ligament. Okay, it is overall flow chart for the connective tissue. Understand, student? Now, what is bones? First of all, we will discuss about bones. First of all, bones are solid matrix. क्या है बेटा? bones is solid matrix. It is hard, strong and non-flexible. Then it store some minerals like calcium and phosphorus. And calcium and phosphorus gives mechanical strength to the cells. Okay, students? Now, what is the function of bones? It made framework of the body, clear, that support body parts, internal body parts also and outer body parts. Now it gives rigidity to the body. Okay, it is bones. Bones क्या है आपका? एक it is solid matrix connective tissue. Okay बेटा. Now second solid matrix is cartilage. Cartilage is a soft elastic tissue. It is flexible also. Okay, and it smoothens bone surface and present at the tip of the nose, earlobes, trachea and larynx. Okay, it is widely spaced cell and it gives elasticity to the body parts. Okay beta, what is the difference between bones and cartilage? Bones are hard, strong and non-flexible, but cartilage is soft and elastic. Now bones are non-flexible, cartilage is flexible. Now bones gives the framework to the body, but it gives the elasticity to the body. Okay, now next is blood. Blood is a fluid matrix, clear. Fluid which gives fluidity to the blood, it is plasma. It contains blood cells like RBC, WBC and platelets. RBC red blood cells, WBC white blood cells and platelets. RBC and WBC are living cells, but platelets and plasma are non-living cells. It contain iron. Iron contain red pigment. It is known as hemoglobin, and HB is the symbol for hemoglobin. Blood contains different proteins like globulin and fibrinogen. Okay, student. Now, what are the functions of blood? Blood carry न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी पार्ट्स. ये बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है विद द किसके साथ आपका? विद द ऑक्सीजन. ओके, एंड इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. क्लियर? ये वेस्ट मटेरियल बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ blood what are the functions of RBC, WBC and platelets? RBC contain oxygen rich blood. Clear? WBC fight disease, clear, fight against the disease causing factors, and platelets helps in blood clotting. It is the functions of blood. Okay beta. Now what is lymph? Lymph क्या आपका बेटा? एक lymph is a colorless. It is a colorless fluid. ओके, ये आपका एक
फ्लूइड आपका ये. Okay, limbs, first of all, it is colorless fluid and which filter out of the blood capillary. जो कहाँ पे filter out होता है आपके blood capillaries में. Okay, then it in the limb absence of RBC and blood proteins, but WBC are found in abundance in the limb. इसमें आपका WBC आपका फाउंड होता है, बट RBC एंड ब्लड प्रोटीन्स आर absent. ओके, एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड. और ये CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को टिश्यू से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. ये बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट. Okay, third type is jelly matrix. Jelly matrix have two types, areolar and adipose tissue. Areolar means it is loose connective tissue. It present between skin and muscles and found in muscles, blood vessels and nerves also. It also known as supporting and packaging tissue, which helps in packaging of tissue, and it helps in repair of tissue after injury, and it fix skin to underlying muscles. जो हमारी स्किन के बिलो में जो मसल्स होते हैं उससे हमारी स्किन को ये क्या करता है, फिक्स करता है. इट इज़ एरियोलर टिश्यू. नाउ एडिपोज टिश्यू, it is fibrous connective tissue. It means some fibers are present in adipose tissue. It is aggregation of fat cells. Fat cells like जो हमारी बॉडी के इनसाइड, बॉडी में जो हमारी फैटी टिश्यूज होते हैं. ओके, जब हमारा इट मीन्स ओबेसिटी होती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी मसल्स बढ़ जाती हैं. इट मीन दीज आर फैटी टिश्यूज. तो वो फैट सेल्स क्या है, इट दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स. लाइक it act as a serve as a fat reservoir like when we are in lack of food. जब हम फूड की लैक होती है हमारी बॉडी में, इट मीन्स जब हम फास्ट में होते हैं तो तब भी हमारी बॉडी एनर्जी जो लेती है वो कहाँ से लेती है, आपकी फैटी टिश्यू से. ओके, इट इज़ एडिपोज टिश्यू. नाउ इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ड्यूरिंग स्वेटिंग. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ adipose tissue. First is tendon, second is ligament. Tendon is inelastic and ligament is elastic. Now tendon attach muscles to the bones and ligament attach two bones. Clear? Yeah, connects two bones. Now tendon is made up of white fibers and ligament is made up of white as well as yellow fibers. Understand student? It is revision of connective tissue. Now it's time for revision worksheet. Okay.